Good morning, students. Yesterday, I have explained about some organs of human body. I hope you will be understand very clearly. Today, I am going to explain about the some places. Here, the description of some places has been given. With the help of the description, we recognize the name of the place. Okay, now I start. Number 1. This is situated in the southernmost tip of India. It is famous for the Vivekanand Rock Memorial. This is the Kanyakumari. Okay, this place is Kanyakumari. I am repeating again. This is situated in the southernmost tip of India. ये इंडिया के सदर्न मोस्ट, सदर्न समझते हैं ना, साउथ में सिचुएटेड है. इट इज़ फेमस फॉर द विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए फेमस है. दिस इज द प्लेस इज कन्याकुमारी. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. दिस टाउन in Israel is the birthplace of Jesus Christ. It is a holy place for the Christians. Okay, this town in Israel, ये टाउन इसराइल में है, is the birthplace of Jesus Christ, जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है. It is a holy place for the Christians, और ये क्रिश्चियंस का होली प्लेस है. So it is Bethlehem. Okay, this place is known as Bethlehem. Now come to third. This place in Belgium is famous for the battle between Napoleon and the British Army. You know, this place in Belgium is famous for the battle between Napoleon and the British Army. ये प्लेस बेल्जियम में इसलिए फेमस है क्योंकि फॉर द बैटल, यहाँ पर नेपोलियन और ब्रिटिश आर्मी की बीच बैटल हुई थी. सो दिस इज द वाटरलू. दिस प्लेस इज बेल्जियम इज फेमस फॉर द बैटल बिटवीन नेपोलियन एंड द ब्रिटिश आर्मी. वाटरलू. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट. फोर्थ इज this city in France is sometimes called the gambling center of the world. This city in France, फ्रांस का ये शहर is sometimes called, कुछ समय पहले जाना जाता था, the gambling center of the world. वर्ल्ड का गैम्बलिंग सेंटर कहा जाता था. This is the Monte Carlo. Clear? Now come to next. Last one is this place in London is known all over the world for its lawn tennis court. This is the Wimbledon. This place in London, लंदन का ये प्लेस is known all over the world, जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, for its lawn tennis court, अपने लॉन टेनिस कोर्ट के लिए जाना जाता है. This is known as Wimbledon. Clear? All 5 answers you have cleared. Now come to tell me. Which place in Odisha is known for launching missiles? This is the Chandipur. Okay. And the froggy speaks, you know. Buland Darwaja is a grand gateway constructed by Emperor Akbar to commemorate his victory over the king of Khandesh, yani Gujarat, in 1573. It is also known as the Gate of Magnificence. Okay. Now come to next news flash. Angkor Wat was shifted from Hindu to Buddhist use sometimes around the late 13th century. The temple is still used by the Buddhists today. इनका टेम्पल अभी बुद्धिस्ट के द्वारा यूज किया जा रहा है. अंकोर वाट was shifted from Hindu to Buddhist. ये हिंदू से बुद्धिस्ट हो गए थे. यूज समटाइम्स अराउंड द लेट 13th century. अराउंड द 13th century ये सब हुआ था. द टेम्पल इज स्टिल यूज बाय द बुद्धिस्ट टुडे. आज भी वो टेम्पल
और मंदिर बुद्धिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है. ओके, क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर ऑल दीज थिंग्स? थैंक यू स्टूडेंट्स.